minus x bar. Then we have, and we know that mu1 is equal to 0, mu2 equal to mu2 dash. This is the variance. Mu2 gives you the variance, mu1 dash gives you the mean, and then these are the central moments, these are the draw moments. ठीक है, तो इसको हमें और कंटिन्यू करना है आगे. तो we had these 4 formulas which we have done yesterday and day before yesterday also. So next we have moment generating function. Moment generating function मतलब as the name indicates moment generating function. तो इससे हमें moments मिलते हैं. हमें how to calculate the moments, we can calculate from moment generating function. So what is a moment generating function? In short, I can write this as MGF, moment generating function. So in short, we write this like we had PDF, probability density function. In the same manner, moment generating functions are denoted by MGF. For a discrete random variable, moment generating function about the value A is denoted by MA of t. Okay, moment generating function for a discrete I'm calculating, not for continuous now. Only for discrete random variable I'm calculating now about the value A. Now, अगर about the value है तो हमें कौन-कौन से moments मिलते हैं? Only raw moments. And about the value A, so we'll get the raw moments. So about the value A denoted by MA of t defined by, now MA of t is equal to expected value of e raised to t into x minus a. E raised to t into x minus a. अगर ये about the origin है तो ये हो जाएगा e raised to t x minus 0 और it is e raised to tx. तो हम लोग यहाँ पे discrete random variable ले रहे हैं तो what will be expected value of this function? It is going to be summation. तो जो भी expected e के अंदर रहता है वो function summation के अंदर आके multiply by that probability. Just like we have calculated e of x. E of x में हम लोग क्या करते थे? Summation x into pi or xi into pi. So here the moment generating function is defined as e of e raised to t into x minus a. And since we are dealing with discrete random variable, this expected value can be taken as summation, whatever is the function here, multiplied by the probability. Okay. Now we have to show that this moment generating function generates moment. We will be able to get the moments from this moment generating function. So normally we have questions like that. Calculate the moment generating function and hence derive the raw moments and central moments, or hence derive mean and variance. तो हमें यहाँ से हमको moments निकालने हैं. So for that, we have this summation e raised to this into pi. Now, anybody remembers what is the expansion of e raised to x? याद है? How do we expand the function e raised to x? किसी कुछ याद आ रहा है? We had e raised to x expansion of functions, Maclaurin series, everything we had in first sim. किसी को याद है? One plus, okay, closer to that. 1 plus x squared by 2 factorial. Some terms you have missed. E raised to, because we know that e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. E raised to x में सब terms है. 1 भी है, x भी है, x square भी है, x cube भी है. So it is defined as, it is expanded as 1 plus x squared by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. अगर हम लोग खाली साइन का फंक्शन लेंगे तो ऑड टर्म्स आते हैं, कॉस का फंक्शन लेंगे तो खाली इवन टर्म्स आते हैं. दैट इज from this expansion only we will get e raised to I theta as cos theta plus I sin theta. अगर हम x को I theta put करते हैं तो we will get this expansion to be equal to cos theta plus I sin theta. So e raised to x has all the terms in it, 1 x square x cube. अगर जो भी पावर है उसका डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर फैक्टोरियल. एक्स स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल. यूजिंग दिस एक्सपेंशन हियर, यूजिंग दिस एक्सपेंशन इनसाइड द समेशन. ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है.
फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड एज समेशन, जो फंक्शन था मल्टीप्लाइड बाय पी आई। तो अभी हमें e रेज टू के बदले ये एक्सपेंशन यूज करना है। सो इंस्टेड ऑफ x वी आर हैविंग t इंटू एक्स आई माइनस ए। इंस्टेड ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन वी आर हैविंग t इंटू पी आई को हम लोग बाहर ले, नॉट द समेशन के बाहर लेकिन एक्सपेंशन के बाहर ले सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज समेशन, अगर मैंने पी आई को ये बाहर ले लिया तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे x के बदले t इंटू एक्स आई माइनस ए प्लस वट एवर इज x दैट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड दिस x अपॉन दिस होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन था वही एक्सपेंशन हमने e रेज टू t इंटू एक्स आई माइनस ए के लिए यूज किया है। ओके, नाउ टेक समेशन इनसाइड। Now take summation inside. Remember summation is for xi and pi. क्योंकि x के अलग वैल्यूज होंगी, p की अलग वैल्यूज होंगी। Summation is it's taken only for xi and pi. T is not. T is independent of that summation. So we can take outside. Or what we have to do is take pi inside the bracket. अंदर लेने के बाद t को हम लोग वो summation से बाहर ले सकते हैं because t is not having any I in it. तो आई कैन राइट फर्स्ट, अगर इसको मैंने अंदर लिया तो समेशन पी आई, फिर टी इंटू समेशन एक्स आई माइनस ए इंटू पी आई, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल समेशन एक्स आई माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू पी आई, देन टी क्यूब बाई 3 इंटू समेशन दिस। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए इंटू पी आई? What will be summation of xi minus a? Now minus a मतलब होता है it is the raw moment. X minus a, it is, or this summation can be written as expected value of xi minus a or x minus a. It is the raw moment, correct? तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा mu 1 dash. ठीक है, mu r dash is summation xr minus xi minus a whole raised to r into pi. तो अगर ये पूरा xi minus a into pi लिया तो this summation will become mu 1 dash, this will become mu 2 dash, this will become mu 3 dash. Since we are taking about the point, it is the raw moment. Raw moments are always denoted by mu r dash. r कब होता है? जब raised to r होता है। यहाँ पे अगर रेस टू आर है तो म्यू आर हो जाएगा, रेस टू 3 है तो म्यू 3 डैश, दिस इज म्यू 2 डैश, दिस इज म्यू 1 डैश। सो आई कैन राइट दिस एक्सपेंशन एंड समेशन ऑफ पी आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1. Summation of pi is always equal to 1. So we will get t into this summation is mu 1 dash, this is mu 2 dash, mu 3 dash. Okay, so which means that the coefficient of t raised to r upon r factorial will be mu r dash. So I can write that the coefficient mu r dash is equal to the coefficient of t raised to r upon r factorial. So we have started with the moment generating function, and from there we are getting this the raw moments. So we are saying that is why this function is called as the moment generating function. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करने के बाद we have to take summation inside, and when we take summation inside, all these summations reduces to the raw moments mu 1, mu 2, mu 3. So we will have mu r dash will become the coefficient of t raised to r upon r factorial. Okay, that is why this ma of t is called as the moment generating function or mgf. ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए किया। अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो भी सेम फंक्शन आएगा। अगर सपोज अबाउट द ओरिजिन हमने लिया है, ठीक है, अगर हमने ओरिजिन लिया है यहाँ पे, तो xi समेशन xi pi इज अगेन म्यू 1 डैश, समेशन xi स्क्वायर pi इज म्यू 2 डैश। ठीक है, a की वैल्यू 0 है तो भी वो म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। So it is about a point or about the origin. We are going to get ma of t is 1 plus this equal to. ठीक है, this we have taken for the discrete random variable, मतलब summation आया है।
और अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है तो इंस्टेड ऑफ समेशन वी विल हैव इंटीग्रेशन. Okay, when we have continuous random variable, then we will have integration. They may not ask again all these theory part, only the problems are expected from here. I just showed you how we get this. अगर continuous है तो same formula, only thing instead of summation we will get integration. Rest everything is the same. ma of t is integration minus infinity to plus infinity e raised to t into x minus a into f of x. जैसे हमने समेशन के लिए किया वही स्टेप्स हमको इंटीग्रेशन के लिए करना है. मतलब e रेज टू x का एक्सपेंशन लिखना है, फिर इंटीग्रेशन को अंदर लेना है और हर एक को रिप्रेजेंट करना है. वी गोइंग टू द सेम आंसर. ज्यादा डिटेल में आई विल नॉट गो, आई जस्ट शो यू हियर. So again we are expanding e raised to x, which is 1 plus x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial. Everything is same. खाली क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, प्रीवियस वाले में समेशन था. I will not go in very detail. फिर सिर्फ f of x को अंदर लेना है. Integration of f of x dx will become 1. This will become t into mu 1 dash. This will become t square by 2 factorial mu 2 dash, एक्सेट्रा. जो हमारे प्रीवियस स्टेप में आया, प्रीवियस स्लाइड में आया है, वही आंसर यहाँ पे भी आने वाला है. ओनली थिंग इंस्टेड ऑफ समेशन वी आर हैविंग इंटीग्रेशन. सो डोंट बॉदर अबाउट द थियरी पार्ट हियर. खाली दिखाया कैसे आते हैं मोमेंट्स. Again it is xi minus a, so we will get the raw moments only. Again the same equation we will get, whatever we had got in the previous one. Mu 1 dash, mu 2 dash, mu 3 dash. Again the coefficient of t raised to r upon r factorial will give you mu r dash. So to calculate moments from the MGF, now we have to use the expansion method, है ना. तो दैट में बी समटाइम्स डिफिकल्ट. तो उन्होंने क्या किया है, और एक मेथड निकाला है हाउ टू गेट द मोमेंट्स फ्रॉम द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. तो क्या करना है, वट एवर इज दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करके उन्होंने म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग. This is actually mu 3 dash is the coefficient of t cube upon 3 factorial. Mu 5 dash will be coefficient of, तो हमको expand करके देखना पड़ेगा what is the coefficient of mu 5 dash, what is the coefficient of, for that you require the concepts of expansion of functions. Okay, so just to avoid that, one more method is used to calculate the moments. तो ये इक्वेशन है हमारा. वेदर इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वी हैव दिस फंक्शन ma ऑफ t इज 1 प्लस t इंटू दिस. अभी ये इक्वेशन को t से डिफरेंशिएट करना है. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ ma ऑफ t इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0, t इंटू म्यू 1 डैश. तो t इंटू म्यू 1 डैश का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा म्यू 1 डैश, प्लस फिर ये हो जाएगा t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश. दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, ओनली t इज द वेरिएबल नाउ. t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्सेट्रा. सो वट एवर इज आवर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, so this concept we are going to apply it in problems. You calculate the moment generating function. To calculate the moments from the moment generating function, differentiate the ma of t or the moment generating function with respect to t. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, म्यू 1 डैश निकालना है.
अगर हमें ये पूरे इक्वेशन में से μ1 डैश चाहिए तो वी कैन पुट t इक्वल टू 0. So we have to calculate now d by dt of ma of t at the point t equal to 0. So d by dt of ma of t at t equal to 0 is μ1 dash. ठीक है. अगर हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल होके खाली t बचेगा, t का डेरिवेटिव 1 μ2 डैश. फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है. फिर से अगर हम t को 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट μ2 डैश. सो μ2 डैश विल बी d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर. मतलब क्या है, whatever we have our moment generating function, उसको हमें t से डिफरेंशिएट करना है एंड देन गो ऑन पुटिंग t इक्वल टू 0. First derivative, put t equal to 0, you will get the first raw moment. Again, the second derivative, again put t equal to 0, you will get the second raw moment, that is μ2 dash. Similarly, we can calculate for 3 and in general r we can write. ठीक है. So what we have to do, अगर वो origin है तो ये a m0 हो जाएगा. Rest everything is same क्योंकि a will become 0 here. So d by dt of m0 of t at t equal to 0 is μ1 dash, μ2 dash, μ3 dash. तो ये प्रॉब्लम्स में हमको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है t से एंड देन पुट t इक्वल टू 0 टू गेट ऑल द रॉ मोमेंट्स. हमें क्यों रॉ मोमेंट्स मिल रहे हैं? बिकॉज वी हैव टेकन द ma of t wala part. We have not taken the moment generating function about the mean. We have taken about the point A. That is why we are getting the raw moments. ठीक है. This concept you make, what is that? Just take down this part from ma of t, how to get the raw moments. That is very important. Just take down this step. पहले ma of t लिखो, उसके बाद चारों के चारों raw moments, μ1 dash, μ2 dash, μ3 dash and μr dash. We are calculating the raw and central moments from the moment generating function. तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि find the moment generating function, hence find the raw moments, hence find the central moments, etc. तो हमें mgf निकालने के बाद उसमें से हमें μ1 dash, μ2, even though we know how to calculate μ1 dash, μ2 dash without using the mgf, but sometimes the questions are you have to calculate the mgf and then find the raw moments, hence derive the raw moments from the mgf. अगर origin है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ma के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा. origin है तो I told you same thing, यहाँ पे m0 हो जाएगा, बाकी सब same रहेगा. Whatever answer we got for ma of t, the same thing we will get for m0 of t. m0 of t at t equal to 0 is μ1 dash, d square by dt square of m0 of t at t equal to 0 is μ2 dash. मतलब क्या है, हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, उसको go on differentiating with respect to t and put t equal to 0. The first derivative will give you the first raw moment, second derivative second raw, etc. वही अगर हमने मीन से निकाला तो क्या आएगा फॉर्मूला में, कैन यू टेल मी? जब हमने अबाउट ए पॉइंट निकाला तो वी गॉट द रॉ मोमेंट्स. So when we calculate about the mean x bar, then what do we get? What type of moments we get then? Central moments. तो सेम चीज हमको करना है, खाली जो हमारा t square by 2 factorial into यहाँ पे μ2 आ जाएगा. Yes, it is the central moment. तो सेम थिंग हमको करना है जो हमने पहले किया था.
पहले वाले में यहाँ पे हमने a लिखा था, तो यहाँ पे a के बदले x बार आ जाएगा। फिर से e रेज टू का एक्सपेंशन, इसको समेशन यूज करेंगे फिर से हम लोग, बिकॉज वी आर टेकन विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एवरीथिंग इज सेम, खाली a के बदले x बार आ जाएगा, फिर e रेज टू को एक्सपैंड करना है, और फिर से we will get the same function. Only thing, instead of the raw moments, now we are going to get the central moment. These are, so we are getting central moments from the moment generating function about the mean x bar. So this concept you have to always remember. अगर हम mean से निकाल रहे हैं तो we are going to get mu1, mu2, mu3. If we are going to calculate from the value a or from the origin, then we are going to get mu1 dash, mu2 dash, etc. तो जो हमने पहले किया वही यहाँ पे भी करना है. Everything is same, a के बदले x बार है यहाँ पे. फिर से summation को अंदर लेना है, so that this summation will be mu1, this will be mu2, this will be mu3. So I can write t into mu1 plus t square by 2 factorial mu2 plus t cube by 3 factorial mu3. Same way, when we differentiate this mx bar of t with respect to t, we will get the first central moment. Again, d square अगर निकाला है तो second central moment, and so on. That can be, the same concept is applied here also. d by dt of mx bar of t. तो हमें इतना देखना है कैसे mgf निकालना है, और mgf निकालने के बाद वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. Now it depends upon, अगर यहाँ पे डिस्क्रीट दिया हुआ है तो वी हैव टू यूज समेशन. अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है तो इंटीग्रेशन, एंड इंस्टेड ऑफ pi we will have f of x फंक्शन. That is only the change. तो फिर से mu r मतलब pr, the coefficient of t raised to r upon r factorial. Same way what we have done for the raw moments, the first derivative with respect to t at t equal to 0 is mu1 dash, second derivative at t equal to 0 is mu2, sorry, mu1 mu2 not dash. We will get the central moments. So I think we'll move to the examples. It will be more clear. We'll take the example. तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करना है. A random variable x has the following probability distribution: x p of x. Find the moment generating function and hence find the mean and the variance. It is just given find the moment generating function. ठीक है, तो हम कोई भी about any point we can calculate. So for simplicity we will calculate about the origin. Nothing is specified कि about mean निकालना है या about a point निकालना है. They have just asked find the moment generating function. तो अगर कुछ भी specified नहीं है तो we can calculate about the origin or m0 of t. अगर specified है about the value a, then ma of t. About the mean अगर दिया है तो mx bar of t. Nothing is specified, we can calculate the directly m0 of t. तो उसके पहले हमें देखना है कि okay, so m0 of t will be expected value of e raised to tx. ठीक है. Now expected value has two formula. One is summation, one is integration. तो ये कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल्स दिया है यहाँ पे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. व्हाई इट इज डिस्क्रीट? बिकॉज यहाँ पे x टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज, 0 1 2 अलग अलग वैल्यूज है यहाँ पे, तो इसलिए दिस इज अ डिस्क्रीट. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी रिटन एज समेशन, समेशन ऑफ e रेज टू t. x के बदले यहाँ पे x की 3 वैल्यूज है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन xi into the corresponding probabilities, that is pi. और अगर यहाँ पे f दिया है तो हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय समेशन f.
अगर f दिया है तो, प्रोबेबिलिटी दिया है तो खाली इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी हमें क्या करना है, x के बदले 0 पुट करना है, p के बदले 1/3 प्लस समेशन निकालना है, फिर x के बदले 1 पुट करना है, p के बदले 1/3, अगेन 2 and 1/3। So calculate the summation. Instead of x, give the values as 0, 1, 2, and instead of the probabilities, take it as 1/3, 1/3, 1/3. So next step में, when x takes 0, तो x के बदले 0 put किया. When x takes the value 0, the corresponding probability is 1/3 plus. When x takes the value 1, so e raised to t into the corresponding probability, that's 1/3. When x takes the value 2, the probability is 1/3. Or I can take 1/3 common. We can write the moment generating function about the origin as 1 plus e raised to t plus e raised to 2t. Okay? Since they have not specified about any point, we have calculated about the origin. About the mean also we can calculate, because we can calculate mean from here. About the value we cannot calculate. About the mean also can be calculated. Nothing wrong in that. But we are calculating about the origin here. अभी हमें क्या निकालना है, mean. So from where, which moment gives you the mean? कहां से हमको mean मिलता है? How do we get mean? Of which either central moment or raw moment gives you the mean? कौन से फॉर्मूला में मीन आता है? Yash is saying central, Tejas is saying raw. Okay. What is the formula for when do we get something equal to mean? Something equal to mean minus A. It is the raw moment. क्योंकि raw moment में होता है mu1 dash is equal to mean और mu1 dash is equal to mean minus A. तो जो mean मिलता है that is calculated from mu1 dash. Since we have taken about the origin, mu1 dash will give you the mean. mu1 dash is equal to the mean. ठीक है, सो mu1 dash हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा m0 of t है उसको डिफरेंशिएट करना है with respect to t and then put t equal to 0. So what we have to do is m0 of t equal, this is the moment generating function, the first part is over. Hence find the mean and the variance. तो mean निकालने के लिए we know that mu1 dash is the mean. That is the raw moment. तो mu1 dash is the mean मतलब हमको ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, आई विल गेट 1/3 इज द कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, e raised to t का डेरिवेटिव एंड e raised to 2t का 2 e raised to 2t. So we have this function. Now put t equal to 0. We know that mu1 dash is equal to d by dt of m0 of t at t equal to 0. So put t equal to 0. What is the value of mu1 dash then? अगर t को 0 put किया तो what is the value of mu1 dash? 1. Okay. So 1/3, t को अगर 0 put किया तो 1 plus 2 equal to 3. तो 1/3 into 3 that will become 1. ठीक है, तो ये हो गया अपना mean. So mean is equal to 1. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? वेरिएंस. now वेरिएंस कहां से मिलता है? हाउ डू वी गेट वेरिएंस फ्रॉम द मोमेंट्स फॉर्मूला? इज इट mu2 dash or mu2? Variance we get it from where? Actually, what is the formula for variance? Variance is e of x square minus e of x the whole square. तो e of x square होता है mu2 dash, e of x the whole square होता है mu1 dash, sorry.
So actually we get from the formula of mu2. Mu2 is equal to, this is mu2, actually variance is mu2 dash minus mu1 dash the whole square. Mu2 dash minus mu1 dash the whole square, which means we have to calculate mu2 dash. To calculate mu2 dash, we have to again differentiate this function with respect to t. So और एक बार differentiate किया तो we will get 4 e raised to 2t. Rest all the terms will remain the same. Again t को 0 put करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3 into 1 plus 4, that is 5/3. Variance is not square root. Standard deviation is square root. Variance is mu2 only. Mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash the whole square. Square root of variance is called as the standard deviation. Okay, so now we have mean is equal to mu1 dash, variance is mu2, which is equal to mu2 dash minus mu1 dash the whole square. That is equal to 5/3 minus 1 equal to 2/3. So first raw moment gives you the mean. The second central moment gives the variance. First raw moment gives the mean. About the origin I'm talking about. And the second central moment, mu2 is the central moment. mu1 dash is the raw moment. So पहला जो raw moment है, that gives you the value for mean. And the second central moment, that is mu2, gives you the value for variance. So variance is actually e of x square minus e of x the whole square. E of x square is mu2 dash. E of x is mu1 dash. So e of x square minus e of x the whole square will give you the variance. So variance is equal to 2/3. Take one more, the same type. A random variable x has the following probability distribution. Find the moment generating function. Hence find the first 4 raw moments and first 4 central moments. तो यहाँ पे पूरा निकालना है हमको. Previous problem में खाली mean और variance पूछा था. So mean was the first raw moment, variance is the second central moment. यहाँ पे भी just find the moment generating function है, तो we are not, we will calculate about the origin only. ठीक है? और about the origin calculate करेंगे तो ही हमको raw moments मिलेंगे. Okay? If this part was not given, then maybe we can calculate about the mean. लेकिन यहाँ पे हमको raw moments निकालना है करके we have to calculate it about the origin or about the point A. But A value is not given here, so we are calculating about the origin. So calculate M0 of t. M0 of t is the moment generating function about the origin. Is e of e raised to tx. As we are given discrete random variable, expected value will become summation e raised to txi into pi. Six marks questions can be expected from this NGF. Summation of e raised to txi into pi. Again substitute करना है यहाँ पे. x के बदले 0, the corresponding probability 1/6. x के बदले 1, 1/3, 2. तो just substitute for x and p. अगर x 0 है तो corresponding pi लिखना है. अगर x को 1 लिया है तो corresponding pi लिखना है. So calculate the summation.
तो क्या होगा यहाँ पे, when x is 0, pi is 1 by 6. When x is 1, pi is 1 by 3. When x is 2, again 1 by 3, and when x is 3, it becomes 1 by 6. So we have got the m0 of t, or the moment generating function. तो यहाँ पे again e raised to t into 0 is e raised to 0, which is 1. So I can write as 1 by 6 plus 1 by 3 e raised to t plus 1 by 3 e raised to 2t plus 1 by 6 e raised to 3t. This is m0 of t. Now हमको निकालना है first 4 raw moments. फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स निकालने के लिए जो भी हमारा m0 ऑफ t है उसको 4 बार डिफरेंशिएट करना है. पहले फर्स्ट डेरिवेटिव विल गिव यू द फर्स्ट रॉ मोमेंट, सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड, थर्ड डेरिवेटिव थर्ड, एक्सेट्रा. और हर एक डेरिवेटिव निकालने के बाद t को 0 पुट करना है. सो नाउ the first step हमने m0 of t, which is the moment generating function, it is defined as e of, now we are dealing only with the discrete part, the next lecture will do the continuous part, summation e raised to txi into pi. तो जितने x की वैल्यूज दी हैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड द करस्पॉन्डिंग p जो है उसको यहाँ पे लिखना है और सिंप्लीफाई करके m0 of t निकालना है. We have got this as the m0 of t. Now differentiate. Differentiate with respect to t and put t equal to 0. Tell me what is the value of the first central moment. इसको differentiate करना है और उसके बाद t को 0 put करना है. Don't put 0 at this stage. Differentiate करने के बाद इसको t equal to 0 put करना है. तो first derivative क्या हो जाएगा? 1 by 6 is a constant, derivative is 0. ये तो सेम रहेगा. यहाँ पे 2 by 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 by 6. First 1 by 6 is 0. Okay, 3 by 2 you are getting. Let's check that. तो फिर 1 by 3 e raised to t का डेरिवेटिव ये, e raised to 2t का डेरिवेटिव 2 e raised to 2t and then 3 e raised to 3t. So 3 by 6 will become 1 by 2. Now put t equal to 0. Put t equal to 0 after differentiating. हर एक जगह t को 0 पुट करना है. तो क्या बचेगा? 1 by 3 plus 2 by 3 plus 3 by 6. So what is the value of that? 1 by 3 plus 2 by 3 plus 3 by 6. Okay, Harsh has got 3 by 2. What about others? Put t equal to 0. 3 by 2 आ रहा है. Yash also got after. Okay. हर एक जगह हमें t को 0 पुट करेंगे तो we will get 1 by 3 plus 2 by 3 plus 1 by 2 because 3 by 6 is 1 by 2. So when we simplify, we'll get the answer as 3 by 2. तो जो हमारा d by dt मिला है उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो we will get mu 2 dash after putting t equal to 0. So what we will do is we will differentiate this equation again with respect to t. तो d square by dt square of m0 of t निकालना है. Already first derivative we have calculated. Calculating the next derivative. तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो खाली कोएफिशिएंट्स में चेंज आएगा because the function is e raised to here. पहला वाला टर्म सेम रहेगा. e raised to 2t का डेरिवेटिव 2e raised to, so we will get 4e raised to. और यहाँ पे ऑलरेडी इट इज 1 by 2, उसके साथ एक 3 आ जाएगा तो 3 by 2 e raised to 3t. Again put t equal to 0 and calculate mu 2 dash. 19 by 6. Okay. Put t equal to 0. So 1 by 3 plus 4 by 3 plus 3 by 2. Simplifying that, 1 by 3 plus 4 by 3 plus 3 by 2. Okay.
Okay, so 19 by 6. It's 19 by 6. ठीक है. थर्ड डेरिवेटिव, हमें 4 रॉ मोमेंट्स निकालने हैं तो 4 बार डिफरेंशिएट करना है. तो सेकेंड बार हो गया. नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन. डी स्क्वायर को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे to get the third derivative. So calculating d cube by dt cube of m0 of t. और एक बार डिफरेंशिएट करो और पुट t इक्वल टू 0. कौन सा 15/2? द नेक्स्ट वन. अच्छा, mu3 you're saying ना next one. Okay, we'll see that. So mu3 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अगेन खाली कोई कॉन्स्टेंट्स में चेंज होंगे. यहाँ पे 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा. 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा. फिर से पुट t इक्वल टू 0. सो 1/3 प्लस 8/3 प्लस 9/2 15/2. ठीक है, 15/2. कैलकुलेट द लास्ट वन. 15/3 किसका है? नेक्स्ट का है कि 15/2. ओके, mu3 dash is 15/2. Now calculate the last, that is mu4 dash, or d raised to 4 upon dt raised to 4 of m0 of t. 115/6. Okay. Okay. तो d रेज टू 4 क्या हो जाएगा? इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है. तो 1/3 e रेज टू t, 8/3 इंटू e रेज टू 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू, तो 16/3 हो जाएगा और ये 27/2. अगेन पुटिंग t इक्वल टू 0. 1/3. ओके, 115/6. करेक्ट, 115/6. So now we have got the first 4 raw moments. First 4 raw moments. Now we have to calculate the first 4 central moments. Now from the raw moments, we know we can calculate the central moments, right? So writing the 4 formulas and calculating the central moments. From we know how to, we have already got the raw moments, mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash and mu4 dash. Now इसके ऊपर हमको, based on these values, we have to calculate the central moments, which are mu1, mu2, mu3, mu4. What is the value of mu1? Okay. (11/12) किसकी वैल्यू है? mu1. Remember, mu1 is always equal to 0. कोई भी नंबर रहने दो, mu1 is always equal to 0. These are the values we got. mu1 is always equal to 0. Next is mu2. mu2 is the variance. mu2 कैसे लिखते हैं? mu2 dash minus mu1 dash the whole square. mu2 is mu1 dash minus mu1 dash square. Now what is mu2 dash? 19/6. mu1 dash is 3/2. Substituting these values here, 19/6 minus 3/2 the whole square. 19/6 minus 3/2 the whole square. What is the answer? It is 11/12. Okay, let me check my answer. Okay, it's 11/12. ठीक है. So write the formula for mu3. I told you how to use Pascal's triangle and write the formula for mu3 and mu4. Just try writing the formula for mu3 and then substitute the values of mu3 dash, mu2 dash and mu1 dash. 49/8.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu3? सबसे पहले फॉर्मूला mu3 का क्या है, mu3 डैश माइनस 3 mu2 डैश mu1 डैश प्लस 2 mu1 डैश क्यू. Substitute for mu3 dash as 15/2, mu2 dash के बदले 19/6, mu1 dash के बदले 3/2. Tell me what is the value? Anybody has got mu3 value? Harsh has got. Okay, Harsh has got different. Tejas has got different answer. What about others? Vish has got 0. Okay. Yes, 0 is right. 0 is the correct answer. Yes, 0 is the correct answer. Okay, substituting for mu3 dash, mu2 dash is 19/6, mu1 dash is 3/2, and then 3/2 the whole cube. Simplify करेंगे तो आंसर इसका 0 आता है. Correct. That is equal to 0. So just check Tejas and Harsh. वैसे ही mu4 निकालना है. mu4 इज इक्वल टू mu4 डैश माइनस 6 into जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखने के बाद we have to write the value for mu4. mu3 is right. तो mu4 का फॉर्मूला कैसे लिखना है? mu4 डैश माइनस 4 mu3 डैश mu1 डैश प्लस 6 mu2 डैश mu1 डैश स्क्वायर माइनस 3 mu1 डैश होल रेज टू 4. Calculate the value. So what is the value? mu4 substitute everything in the calci. Anybody, if you've got the answer, just write it on the chat box so that you can confirm answers. (83/48). Okay, 83/48. Okay, let me check my answer. Correct, 83/48. Yes, right. Correct. mu4 is equal to 83/48. Yes, correct. All of you are getting the right answer. Okay, so we have got MGF. From MGF, we have differentiated with respect to t and putting t equal to 0. We got the first 4 raw moments, and from the raw moments, we are calculating the central moments. Next problem. Now, in this problem, the change here is they have asked only the central moment. ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया है वैसे भी हम लोग कर सकते हैं. You calculate m0 of t and then calculate mu1 dash, mu2 dash, mu3, and from that you can calculate the central moments.
लेकिन हमको अगर डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स निकालना है तो कैन वी डू दैट? तो क्या करेंगे हम लोग फिर? अगर हमें सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली निकालने हैं विदाउट, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड रॉ मोमेंट्स हियर, अगर रॉ मोमेंट निकाल, यस अबाउट द मीन निकालना है, करेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालने के बाद m0 ऑफ टी, एम एक्स बार ऑफ टी निकाल लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट विल गेट डायरेक्टली द सेंट्रल मोमेंट्स। अगर रॉ मोमेंट्स निकालने के बाद निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। बोथ द आंसर्स आर ओके, बोथ द आंसर्स आर राइट। जैसा हमने अभी तक किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉ मोमेंट्स नहीं पूछा है, खाली सेंट्रल मोमेंट्स पूछे हैं। तो वी कैन टेक डायरेक्टली, वी कैन कैलकुलेट एम एक्स बार ऑफ टी, ठीक है। अगर m0 ऑफ टी निकाला है तो फिर हमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एक्सेट्रा निकालने के बाद μ1 μ2 μ3 μ4 निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली mx बार ऑफ t कर दिया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन? x दिया है, p दिया है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट? इट इज समेशन x into p, summation xi into pi. Yes, summation xi into pi. So we can write, this is the formula for m0 of p, summation of xi into pi. So we can calculate minus 2 into 1 by 3 plus 3 into 1 by 2 plus 1 into 1 by 6. We get the answer as equal to 1. So mean is equal to 1. तो अभी हमें क्या करना है, x बार के बदले 1 पुट करना है। तो we will get t into minus 2 minus 1, 3 minus 1, 1 minus 1, हर एक जगह x बार के बदले 1 यहाँ पे पुट करना है। So when we expand that, we will get e raised to 2 into xi के बदले minus 2, x बार के बदले 1, corresponding probability is 1 by 3. फिर xi के बदले 3, x बार के बदले 1, the corresponding probability 1 by 2. Similarly, x is 1, x bar is also 1, 1 by 6. So we get this as the moment generating function, which is e raised to minus 3t into 1 by 3 plus e raised to 2t into 1 by 2. Now, when you differentiate this with respect to t, directly we can write the central moment. अगर हमें raw moments नहीं निकालना है तो we can calculate about the mean and then differentiate this with respect to t and put t equal to 0. We will get directly mu1, mu2, mu3, mu4. तो हमें रॉ मोमेंट्स निकालने के बाद ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मच इजियर इफ यू डू इट इन दिस फॉर्म, बिकॉज हमें वी कैन कैलकुलेट एक्स बार व्हेन वी आर गिवन दीज डेटास, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू 1 हो गई, देन वी आर कैलकुलेटिंग एम एक्स बार ऑफ टी, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इक्वल टू 0, विल गेट μ1, डी स्क्वायर विल गिव μ2, डी क्यूब μ3 एक्सेट्रा। तो डायरेक्टली यहाँ पे μ1, μ2, μ3, μ4 नहीं मिल जाएंगे हमको। We have this differentiating first, and what should be the value of mu1 actually? mu1 0 ही होना चाहिए, है ना, mu1 is always equal to 0. तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस 3 by 3 e raised to minus 3t plus 2 by 2 e raised to 2t, ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा जब t को पुट करेंगे, t को 0 पुट करेंगे, तो mu1 is equal to 0. We know that mu1 is always equal to 0, है ना, तो we got mu1 equal to 0. Now calculate mu2, उसके लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, put t equal to 0, थर्ड डेरिवेटिव put t equal to 0 एक्सेट्रा, ठीक है। Let's complete this part. Go on differentiating and putting t equal to 0, we can get all the central moments, ठीक है। नहीं तो हमें m0 ऑफ t निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश निकालने के बाद उसमें से μ1, μ2, μ3, μ4 निकालना। अगर हमने mx बार ऑफ t निकाल दी डायरेक्टली तो हम डायरेक्टली μ1, μ2, μ3, μ4 निकाल सकते हैं आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. चेक दीज वैल्यूज, यू कैन डू बाय एनी मेथड, वहां पे थोड़ा लंबा पड़ेगा बिकॉज वी आर हैविंग, वी हैव टू कैलकुलेट μ1 डैश, μ2 डैश एंड उसके बाद उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट m0 ऑफ t एंड डू दैट, ठीक है।
Just check these values. You can stop for today. Yes, correct है. mu1 has to be equal to 0. तो mu1 का वैल्यू अपने आप 0 आ गया यहाँ पे. mu2 का वैल्यू 5 आया. mu3 is -5. mu4 is 35. ठीक है. So please write your attendance. Don't forget to write your attendance, those who have not written. So thank you. We'll continue in the next lecture.